पीपीटी दिख रही है मेरी सबको? Yes, sir. So yesterday even I have explained you the pipeline organization of ARM. So as far as your ARM 7 or ARM 7 TDMI is concerned, we have three-stage pipelining, that is fetch, decode, and execute. So I have explained you what do you mean by pipelining and what do you mean by 3-cycle latency. Okay, 3-cycle latency, or you can say one instruction per cycle throughput. यानी हम एक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. To be more clear, if you see in the third cycle, we could execute the first instruction, we could decode the second instruction, and we could fetch the third instruction. So everything happening parallelly. Okay, so that was the main concept of pipelining. Okay, then yes. So now we will start with the different modes. What are the different modes of operation of ARM 7? I want everyone to pay attention now. This is important. Now, when you talk about the different modes, there are total 7 modes. Okay, try to understand. There are total 7 modes are there. Now, these 7 modes, I will tell you the name, but these 7 modes, only one mode, which is called as a user mode, is called as unprivileged mode. It is called as unprivileged mode. And other than user mode, the remaining 6 modes are called as privilege mode. Okay, are called as privilege mode. So if you see here in this slide, privilege mode, what do you mean by privilege mode? Okay, what do you mean by privilege mode? Now, whenever I'm talking about the privilege modes, I have told you that in the privilege mode, you have total 6. Okay, and in non-privilege mode, you have only one. You have only one. And what is that mode? Under the unprivileged mode, only one mode is there, that is user mode. And 6 modes, I will let you know the names. So as far as privileged modes are concerned, we have 6, and non-privileged mode we have only one, and that mode is called as user mode. But what do you mean by privileged mode and non-privileged mode? So when you talk about the privileged mode, it only means that we have full read and write access to CPSR. Now, what do you mean by CPSR? You are familiar with the word PSR, Program Status Register. Or in 8051, we have understood this PSR as PSW, Program Status Word. Okay, so in ARM, we have a program status word. It can be CPSR or it can be SPSR. Okay, so PSR and this PSR, they are common. But what's the difference between the C and S? C stands for current program status register and S stands for saved program status register. तो हम ये सब चीजें डिटेल में देखने वाले हैं आगे. तो मुझे सिर्फ यही बताना है कि if I have an access or to read my CPSR or to write my CPSR, then it is called as a privilege mode. I have a privilege to read and write to CPSR. Okay, but if I only have a reading access, si mere paas read access hai CPSR ka, then I would say I am in non-privilege mode. I do not have a privilege to write down in CPSR. I only have access to read my CPSR. तो हम जब रीडिंग का एक्सेस ही हमारे पास जो है, तो हम नॉन प्रिविलेज मोड में है. तो नॉन प्रिविलेज मोड में हम सिर्फ एक यूजर मोड में रहेंगे. कौन से मोड में हम नॉन प्रिविलेज मोड में? एक ही मोड है और वो मोड का नाम है यूजर. और प्रिविलेज मोड में जिसमें हम रीड और राइट एक्सेस कर सकते हो सीपीएसआर को, देन it is called as the privilege mode. So total we have 6 modes. So we will list then what are the names of them. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑपरेटिंग मोड्स मेरे पास 7 है, उसमें से एक मोड का नाम है यूजर, और यूजर मोड में नॉन प्रिविलेज मोड है वो, बिकॉज आई ओनली हैव एन एक्सेस टू रीड माय सीपीएसआर. अदर देन यूजर मोड, remaining 6 modes will come under privilege mode because I have full access to read as well as write my CPSR. और CPSR क्या है? C stands for current program status register and
और एक एसपीएसआर होता है, तो हम ये दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं आगे चल के। तो सी स्टैंड्स फॉर करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर एंड एस स्टैंड्स फॉर सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज है कि बोथ ऑफ देम आर पीएसआर और यू कैन से पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस बोर्ड। और आपको पता है प्रोग्राम स्टेटस बोर्ड में हमारे फ्लैग्स होते हैं, तो वही चीजें हम इसमें भी देखने वाले हैं कि सीपीएसआर या फिर एसपीएसआर में कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं और कौन कौन से बिट्स होते हैं। ओके, तो और एक इम्पोर्टेंट बात है अबाउट सीपीएसआर एंड एसपीएसआर कि if I ask you to tell me the size of CPSR or SPSR, the size of CPSR or SPSR is of 32 bit. ओके, लेकिन पूरे के पूरे 32 बिट हम यूज नहीं करते हैं, कुछ बिट्स हम रिजर्व करके रखे और बाकी की कुछ बिट्स है वो हम यूज करते हैं। तो जब हम सीपीएसआर पढ़ेंगे या फिर एसपीएसआर पढ़ेंगे, दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज क्लियर। कम टू द थर्ड पॉइंट, 6 privilege modes and 1 non-privilege mode, जो हमने अभी आपको मैंने बताया। See the fourth point, user mode is non-privilege mode, okay, and default mode is user mode. So this last point is important. मेरे पास 7 operating modes है, but by default always I will be in user mode. By default I will be in the user mode. ओके, अनलेस एंड अनटिल अगर मैं एक मोड से दूसरे मोड में नहीं जाता तो मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा यूजर मोड में रहने वाला हूँ। ओके, और यूजर मोड कौन सा मोड है? नॉन प्रिविलेज मोड, नॉन प्रिविलेज मोड। ओके, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। if you have any question, please stop me there and ask me. Okay, if I am proceeding further, I am assuming कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ऑपरेटिंग मोड्स। अब तक मैंने आपको नाम नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको एक ही नाम बताया यूजर मोड का, हम बाकी के नाम अभी तुरंत देखने वाले हैं। Yes, so there are 7 operating modes. Number 1, user mode, which is called as a unprivileged mode. Okay, and in the privileged mode we have remaining 6. Which are they? First one is system mode, second one is FIQ, third one is IRQ, fourth one is abort, fifth one is undefined, and sixth one is supervisor. Okay, so under the privilege modes you have 6, and under the non-privileged mode there is only one mode which is called as user mode, and और हमेशा by default हम user mode में रहते हैं, हम by default हमेशा user mode में रहते हैं। Okay, so that is the meaning. So we will be able to see now what are these different modes and what are the significance of this. Okay, what is the significance of this? तो हमें तुरंत देखने वाले। So let's proceed further. Yes, now we will see one by one what is a user mode. Now what is a user mode? See the short form, it is given as USR. Okay, so user mode, normal program execution mode. अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आर्म में तो हम यूजर मोड में काम कर रहे हैं। तो what I would say that whenever you are doing a normal execution of a program, you are by default in the user mode. Okay, so that is the first one. Then comes the next one, that is FIQ. Then comes the next one which is called as FIQ. Now FIQ के बारे में, see the short form, it is given as FIQ. What is FIQ stands for? FIQ stands for fast interrupt. FIQ stands for fast interrupt. Okay, FIQ, so it is fast interrupt. It is called as fast interrupt. Now what is this FIQ? We will see now. Now this supports the high-speed data transfer or channel process. Okay, it supports the high-speed data transfer or channel process. But let me give an example कि हम FIQ mode में switch कब होते हैं. Okay, let me give an example. See, if you take an example of your smartphone or if you take an example of your laptop. Okay, please listen to my example. This is very important to understand the concept of FIQ, which is called as a fast interrupt. Now suppose if you take an example of a smartphone or your laptop,
if while using your laptop or smartphone, okay, it is obvious that your battery is goes on discharging. Okay, your battery goes on discharging. So suppose you reach at 10%. If you reach at 10%, initially it was 100% fully charged. Then while using, it goes from 100 to 99, 98, 80, 80, and so on and so forth. At the last, when you have a capacity of only 10%, when you have a capacity of 10%, then automatically what will happen? Now in some of the smartphones we have a feature that directly will go back to the backlight area. Okay, or you take an example of your laptop. Okay, your laptop will switch to the battery saving mode. Your laptop will go to the battery saving mode. Now here you can treat that whenever you have a battery backup, whenever you have a battery of only 10% remaining, okay, then that indicates that there is a fast interrupt, because you have to give an urgent attention to this particular scenario. कि सिर्फ ऐसा हो रहा है कि 10% ही आपके पास बाकी है, और सडनली ये होता है कि आपका लैपटॉप it goes to the battery saving mode. So it gives an indication to the user that you have to charge your battery as early as possible. Okay, so in this case you can treat this going from normal processing towards the battery saving backup. Then it gives an indication that you have to urgently charge your battery. It gives an indication. So I can take this as a fast interrupt. I can treat this as a fast interrupt, जहाँ पे I have to urgently give service to particular interrupt. यहाँ पे interrupt क्या है? यहाँ पे interrupt ये है कि आप जब 10% बैटरी है तो आप suddenly power saving mode में जाते हो. Okay, so that is the interrupt, and that is a fast interrupt. Why it is a fast interrupt? Because it requires urgent service. Because it requires urgent service. Okay, you cannot deny this interrupt. अगर आप डिनाई करोगे तो ग्रेजुअली आप 10% से आप 0% पे जाओगे, एंड अगर आपने कुछ सेव नहीं किया है देन यू आर लूजिंग योर कंटेंट. Okay, so that is why FIQ is a fast interrupt in which you require prompt attention should be given to such type of interrupt. So I have given an example where your battery is draining out, and at one point automatically you switch to power saving mode. Okay, so that is the best example of FIQ. Okay, so under this FIQ it supports the high speed data transfer or channel process. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ यही दिया है कि FIQ में हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम FIQ में कब जाते हैं? whenever you have a fast interrupt, and I have given an best example of where your battery is draining out. Okay, so this is the best example of this. Okay, now there is one more example which is called as IRQ. Okay, now this is called IRQ, stands for interrupt request. Okay, now this is called as low priority. अभी यहाँ पे क्या होता है, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होता है और दूसरा लोअर प्रायोरिटी होता है. As far as FIQ is concerned, I should say that this is of highest priority, क्योंकि इसको अटेंशन देना जरूरी है. Okay, but when I talk about IRQ, this is of lower priority. ये दोनों भी इंटरप्ट है, FIQ as well as IRQ. But difference क्या दोनों में? FIQ is of higher priority, IRQ is of lower priority. So हम IRQ priority में कब जाते हैं? When do you go to the IRQ mode? I will give you the other example. Now, suppose take an example of your laptop. If you are using a laptop, okay, or if you take an example of desktop computer, okay, अगर हम desktop computer को on करके रखे हैं, okay, and हम 5 मिनट तक अगर हम desktop computer को हाथ नहीं लगाए, you just assume that you haven't touched your desktop computer
You haven't touched means you haven't touched your keyboard, you haven't touched your mouse, you haven't touched the screen. तो 5 मिनट के बाद क्या होता है, directly there is a blank screen. That means you go to the sleeping mode. Automatically you go to the sleeping mode. तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है. तो आपकी स्क्रीन जब ब्लैंक होती है, और मुझे बताओ कि व्हेन योर स्क्रीन विल ग्लो, या फिर आपकी स्क्रीन टर्न ऑन कब होती है? व्हेनेवर यू आर टचिंग, अगर आप कीबोर्ड को टच करते हो या फिर आप माउस को हिलाते हो, सडनली यू विल सी दैट योर स्क्रीन विल ग्लो. जो पहले ब्लैंक थी स्क्रीन, वो ग्लो हो गई. नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्ट, बट दिस विल कम अंडर IRQ. This will come under IRQ because it doesn't require it doesn't require the attention, the urgent attention. Okay, आपने सिर्फ माउस को जस्ट मूव किया, because of that the screen will glow. ये माउस जब आप हिलाते हो या फिर आप कीपैड को आप अगर टच करते हो, that is an indication of interrupt. That is an indication of interrupt. Okay, and that is called as IRQ. That is called as IRQ. Okay, so what is about this IRQ? Used for general purpose interrupt handling. Whatever the general purpose, जो भी कुछ interrupts है, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया है, वो टाइप के interrupts को हैंडल अगर करना है, तो I will go into the which mode? I will go into the IRQ mode. I will go into the IRQ mode. Okay, और हायर प्रायोरिटी की जो interrupts है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो मोड में हम कब जाते हैं? जब हम FIQ में जब जाते हैं, या फिर वो टाइप के जब हायर प्रायोरिटी के इंटरप्ट जब आते हैं, वी गो इन विच मोड? वी गो इन FIQ मोड. और लोअर प्रायोरिटी के जब इंटरप्ट आते हैं, तो वी गो इनटू द IRQ मोड. ओके, सो आई होप दिस टू FIQ and IRQ आर क्लियर. FIQ stands for fast interrupt. It is called as fast because it is of higher priority. And the next one is IRQ. It is called as interrupt request. It is called as interrupt request. It is called as interrupt request. So we have seen the user, we have seen the FIQ, we have seen the IRQ. We will see the supervisory mode. So now what is this supervisory mode? Okay, now this is the simple one. Whenever you are resetting your microcontroller arm, या फिर आप अगर आप आपके स्मार्टफोन को रीसेट कर रहे हो, या फिर आप आपके लैपटॉप को रीसेट कर रहे हो, तो whenever you are resetting, you are going into which mode? You are going into the supervisory mode. Okay, you are going into the supervisory mode. So supervisory mode का short form क्या है? SVC. SVC. Okay, so it is a protected mode for the operating system. So whatever the operating system I am using, for that it is a protected mode. See, आपको जो यहाँ पे whatever is mentioned here ना, these are just giving an indication that supervisory mode में क्या हो रहा है. लेकिन whatever I am saying that हम सुपरवाइजरी मोड में हम कब जा रहे हैं? It's my duty to tell you when we go to the supervisory mode, when do we go to FIQ mode, when do we go to IRQ mode. तो सुपरवाइजरी मोड में हम कब जाते हैं? Whenever you are resetting your arm, or in that case if you are resetting any of your device. Okay, दूसरा और एक रीजन है, हम सुपरवाइजरी मोड में कब जाते हैं? We go to the supervisory mode whenever we encounter software interrupt. Whenever we encounter software interrupt. Okay, तो software interrupt short में क्या लिखा जाता है? SWI. SWI stands for software interrupt. So under two conditions we switch to supervisory mode. Number one, whenever we are entering into the reset, जब कभी रीसेट होता है तब हम सुपरवाइजरी मोड में जाते हैं. और सेकेंड इज व्हेन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. सॉफ्टवेयर टाइप की अभी ये फास्ट इंटरप्ट है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है, नाउ दिस कैन बी हार्डवेयर आल्सो, दिस कैन बी हार्डवेयर आल्सो. ओके, बट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर द इंटरप्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन में अगर हम इंटरप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, देन इट इज कॉल्ड एज प्योरली थ्रू द इंस्ट्रक्शन. It is purely through the instruction. So when a software interrupt instruction is executed, we go into the supervisory mode. Okay, तो यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट की बात नहीं आएंगी.
जब कभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एनकाउंटर किया जाएगा इंस्ट्रक्शन में, तब हम सुपरवाइजरी मोड में जाएंगे. ओके, दैट टाइम वी विल गो इनटू द सुपरवाइजरी मोड. ओके, और सुपरवाइजरी मोड में क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोटेक्टेड मोड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोटेक्टेड मोड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये 4 हो गए. नेक्स्ट विल गो टू द अबॉर्ट नाउ. व्हाट डू यू मीन बाय अबॉर्ट? नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस अबॉर्ट. हम अबॉर्ट मोड में कब जाते हैं? ओके, हम अबॉर्ट मोड में कब जाते हैं? नाउ suppose you are handling memory which is not part of the physical memory. Again, I'm repeating. Suppose you have a memory size of 4 kilobyte. I'm giving an example. If you have a memory size of 4 kilobyte और मुझे वो मेमोरी को एक्सेस करना है which is beyond 4 kilobyte, that means which is not part of the physical memory. तो हम कभी ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? If I am handling memory which is not part of the physical memory, that means it is called as a memory access violation. It is called as memory access violation. यानी हम वो मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं जो फिजिकल मेमोरी का पार्ट ही नहीं है, या फिर वो मेमोरी साइज में वो मेमोरी नहीं है. दैट मीन्स बियॉन्ड दैट मेमोरी, इफ आई वांट टू एक्सेस दैट मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी एक्सेस वायलेशन. तो हम कभी ऐसे मेमोरी एक्सेस को हम जब कभी ऐसे मेमोरी को एक्सेस करते हैं, देन वी गो इनटू अबॉर्ट मोड. ओके, सो दिस अबॉर्ट ऑपरेटिंग मोड में हम कब जाते हैं? जब कभी हम वी आर हैंडलिंग मेमोरी which is not part of the physical memory, which is not part of the physical memory. या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि अगर if I'm handling memory access violation, if I'm handling memory access violation, यानी वो मेमोरी को एक्सेस करना जो प्रेजेंट नहीं है, वो मेमोरी को एक्सेस करना जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हम ऐसे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आई एम हैंडलिंग मेमोरी एक्सेस वायलेशन. देन आई विल गो इन विच मोड? आई विल गो इनटू द अबॉर्ट मोड. ओके, तो अबॉर्ट मोड में क्या है? इम्प्लीमेंट्स वर्चुअल मेमोरी एंड और मेमोरी प्रोटेक्शन. तो अबॉर्ट मोड में हम जब जाते हैं तो दैट इट इम्प्लीमेंट्स वर्चुअल मेमोरी एंड और मेमोरी प्रोटेक्शन. सो हम ये डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको देखना है कि हम अबॉर्ट मोड में हम कब जाते हैं. ओके, और अबॉर्ट मोड में क्या चीज है? इम्प्लीमेंट्स वर्चुअल मेमोरी एंड और मेमोरी प्रोटेक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द अबॉर्ट मोड. नाउ सी द अनडिफाइंड मोड. व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफाइंड मोड? नाउ अनडिफाइंड मोड में भी वही होता है. अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ विच इज अनडिफाइंड, मैं ऐसे टाइप के इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ जो अनडिफाइंड है, जो डिफाइंड नहीं है, देन आई विल गो इन विच मोड? आई विल गो इनटू द अनडिफाइंड मोड. सो अनडिफाइंड मोड में हम कब जाते हैं? व्हेन आई एम हैंडलिंग अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन डिफाइंड ही नहीं है, या जो इंस्ट्रक्शन कोएग्जिस्ट ही नहीं होता है, वैसे इंस्ट्रक्शन को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू द अनडिफाइंड मोड. ओके, तो अनडिफाइंड मोड में क्या है? सपोर्ट सॉफ्टवेयर इम्यूलेशन ऑफ हार्डवेयर को प्रोसेसर. ओके, सपोर्ट सॉफ्टवेयर इम्यूलेशन ऑफ हार्डवेयर को प्रोसेसर. तो दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि अनडिफाइंड मोड में क्या है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हेन डू वी गो टू द अनडिफाइंड मोड? ओनली व्हेन यू आर हैंडलिंग अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन. Okay, so that is the case. The last one is system. The last one is called as a system mode. Okay, अब system mode, let me show you here. Now the system mode and the user mode, both of them will share the same registers.
अगेन आई एम सेइंग, प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्या बता रहा हूँ, यूजर मोड, आपको पता है यूजर मोड इज द अनप्रिविलेज मोड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनप्रिविलेज मोड। और व्हाट अबाउट सिस्टम मोड, सिस्टम मोड इज अ प्रिविलेज मोड। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यूजर मोड इज अनप्रिविलेज, सिस्टम मोड इज प्रिविलेज, लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, बोथ ऑफ देम शेयर द सेम रजिस्टर्स, both of them share the same register, both of them share the same register. Okay, so that is the only difference between the system mode and user mode. Okay, तो ये पिक्चर, दिस पिक्चर विल बी मोर क्लियर जब मैं आपको टोटल 7 मोड्स दिखाऊंगा in a single glance. At a glance, if you see this particular figure, that time it will be more clear. मैंने सिर्फ आपको ये अभी दोनों में क्या बताया कि सिस्टम मोड एज वेल एज यूजर मोड शेयर द सेम रजिस्टर्स, एंड इफ यू सी द डिफरेंस, यूजर मोड इज अनप्रिविलेज्ड एज वेल एज सिस्टम मोड इज प्रिविलेज्ड। ओके, तो यही डिफरेंस है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है, आई विल लेट यू नो। तो सिस्टम मोड में क्या लिखा है, लास्ट, ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, वेट अ मिनट, runs privileged operating system task, runs privileged operating system task। तो नॉर्मल मोड में तो हम नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, विच और यूजर मोड इज अनप्रिविलेज, लेकिन सिस्टम मोड में क्या है, रन्स प्रिविलेज ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। ओके, इट रन्स प्रिविलेज, दैट इज वाई दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों सेम रजिस्टर को शेयर करते हैं, लेकिन एक है अनप्रिविलेज, दूसरा है प्रिविलेज। नाउ वी विल see this concept clearly now in the next slide. Next slide में now the picture will be more clear. See this now. I want everyone to pay attention now. जो मैंने आपको सिखाया, everything is available here now. First one, the ARM has 7 basic operating modes. Number 1, user mode. It is unprivileged mode under which most tasks run. यानी मैक्सिमम आपके जो एप्लीकेशन है वो यूजर मोड में रन होने वाले हैं, और बाय डिफॉल्ट हम यूजर मोड में रहते हैं। Now, okay, come to the next one, FIQ. FIQ stands for fast interrupt. Entered when a high priority interrupt is raised. हम FIQ में कब जाते हैं, जब फास्ट इंटरप्ट आता है। कैन यू सी हियर FIQ, फास्ट इंटरप्ट, फास्ट इंटरप्ट बोलो या फिर हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट बोलो। प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर। दैट एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, and these examples I have directly taken from the textbook. Okay, so FIQ में हम कब जाते हैं, when a high priority fast interrupt is raised. raise बोलो या फिर encounter बोलो। next one is IRQ. हम कब जाते हैं, entered when a low priority normal interrupt is raised. low priority बोलो या फिर normal बोलो। IRQ का फुल फॉर्म क्या है, interrupt request, interrupt request। ओके, और FIQ का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो ये दो हमने देख लिया। सुपरवाइजरी के बारे में मैंने क्या बताया था, कि हम कब सुपरवाइजरी मोड में जाते हैं, एंटर्ड ऑन रीसेट, जब कब रीसेट होता है, और एंड व्हेन अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन शॉर्ट में हम लिखते हैं SWI, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, SWI, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके, तो कभी अगर हम रीसेट कर रहे हैं, या फिर हम रीसेट में एंटर हो रहे हैं, या फिर हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम सुपरवाइजरी मोड में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अबॉर्ट। अबॉर्ट मोड में हम कब जाते हैं, यूज टू हैंडल मेमोरी एक्सेस वायलेशन। कैन यू सी हियर मेमोरी एक्सेस वायलेशन, वो मेमोरी को एक्सेस करना जो मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर ऐसे मेमोरी को हम एक्सेस करने जा रहे हैं तो हम अबॉर्ट मोड में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अनडिफाइंड मोड। अनडिफाइंड मोड में हम कब जाते हैं, यूज टू हैंडल अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। हम ऐसे इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रहे हैं जो अनडिफाइंड है, ओके, विच इज अनडिफाइंड।
तो अगर हम ऐसे इंस्ट्रक्शन को एनकाउंटर करते हैं, देन वी आर गोइंग इनटू विच मोड, वी आर गोइंग इनटू द अनडिफाइंड मोड। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. हाँ, ओके Yes, sir. ओके। सो अनडिफाइंड मोड में हम कब जाते हैं? whenever you encounter an undefined instruction. And the last one is system mode, which is a privileged mode using the same registers as user mode. तो प्लीज वो याद रखना, मैंने आपको तो बताया था ये वाला सिस्टम मोड स्लैश यूजर मोड, दोनों दोनों 21 पे मैंने लिखा है, मैंने दोनों को 21 में लिखा है। क्यों? बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम रजिस्टर्स। ये कौन से रजिस्टर्स है अभी हम तुरंत देखने वाले, ये कौन से रजिस्टर्स है हम तुरंत देखने वाले। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि यूजर मोड अनप्रिविलेज मोड में आता है और सिस्टम मोड प्रिविलेज मोड में। ओके, तो यस, so that was about the different 7 modes. तो अब अभी आपको पता चला कि हम कौन कौन से मोड में कब जाते हैं और वो मोड में क्या होता है। ओके, वो मोड में क्या होता है। We will proceed further. Okay, wait, I will show you now the figure now. Yes, can you see this, everyone? सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes. So I want everyone to pay attention now. This is the important figure. After explaining you each and every concept, now this is the figure which will tell you which are the registers and which are the mode. Okay, which are the registers and which are the mode. So please pay attention now. If you see at the top side, here you will see the different modes. Can you see your user and system modes are in the same column? User mode and system mode is in the same column. Okay, then you have supervisory mode, then you have abort mode, then you have undefined mode, then you have interrupt mode, and then you have fast interrupt mode. Okay, fast interrupt mode. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7. Okay, now I want everyone to pay attention. I want your keen observation now. Now as you see the first column, you see the first column, we in first column user and system modes are sharing the same registers. Which are these registers? R0, R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14. So total there are how many registers are there? Total 15 registers are there. Total there are 15 registers are there. Okay, we will count these registers. We will count these registers afterwards. So what I meant to say that from R0 to R14, from R0 to R14, you have total 15 registers are there. Okay, total 15 registers are there. Now, whenever you talk about R14, okay, now R14 के नीचे if you see PC, PC is, this word is not new to you. PC stands for program counter. This PC is also said as R15. R15. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this is R15. So R15 is nothing but PC, program counter. R15 is nothing but program counter. Okay. So R13
R14 and R15, they are special registers. They are special registers. For example, R15 is also called as program counter. So what about R14 then? R14 is also, it has a special meaning for that. Okay, R14 is having some special meaning for that. Okay, so whenever you talk about R14, it is called as a link register. It is called as a link register. Okay, it is called as a link register. R14 is called as link register. Okay, now in a similar manner, we also have R13. We also have this R13. But if I go with the R13 and then 14, 15, I will tell you what is this R13 is all about. So here, one important thing is that as far as R13, R14 and R15 are concerned, they are special registers because they are doing some special tasks. For example, R15 is used as a program counter. R14 is used as a link register. R14 is used as a link register. Similarly, R13 is having also some specific task. So which is that task, I will let you know. Okay. Now, other than this R13, 14, 15, if you see here R12, say like R0, they are general purpose register. They are general purpose register. Okay. If you see in the same column, can you see here CPSR? Can you see here CPSR? Okay. It is a current program status register. It is a current program status register. Okay. ये हो गया यूजर या फिर सिस्टम मोड के बारे में पहला कॉलम. अगर हम बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में सपोज और कुछ कारण बिकॉज ऑफ सम रीजन आई हैव गॉन फ्रॉम यूजर मोड टू सुपरवाइजरी मोड. अब सुपरवाइजरी मोड में क्या क्या चीज है मेरे पास देखो. इफ यू सी इन द सुपरवाइजरी मोड you have these R0 to R12. ये R0 to R12 are the same which are R0 to R12. मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड में गया बिकॉज ऑफ सम रीजन, whatever you are seeing the register in R0 sorry in supervisory mode, ये जो दिख रहा है आपको R0 से लेके R12, ये वही रजिस्टर है जो यूजर के पास थे. तो ये R0 और ये R0 अलग नहीं है, एक ही है. ये R4 और R4 अलग नहीं है, एक ही है. ये R7 और R7 एक ही है, अलग नहीं है. तो अलग क्या है इसमें? इसमें ये अलग है R13, ये R14 अलग है, R13 और R14. इसलिए यहाँ पे देखो R13 को क्या नाम दिया है, R13 अंडरस्कोर SVC. प्लीज गिव मी 1 minute, आई विल कम बैक. ओके, देयर वाज समवन ऑन द डोर. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So so I was talking about when I go from user mode to the supervisory mode, your R0 to R12 are the same registers which are available when you are in the user mode. तो यहाँ पे दूसरे कौन से नए रजिस्टर है? तो नए रजिस्टर ये है R13. R13 का नाम क्या दिया है? R13 अंडरस्कोर SVC. SVC बोले तो दैट इज सुपरवाइजरी. SVC मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म क्या है सुपरवाइजरी का, SVC. सो R13 अंडरस्कोर SVC is the new register. R14 underscore SVC is also the new register. Okay, and what about this PC? This PC and this PC are the same, no change. What about CPSR? This CPSR and this CPSR is also same, no change. But there is one more
that is SPSR. So can you see at the bottom? This is called as saved program status register underscore SVC. This saved program status register is for dedicated supervisory mode, इसलिए उसका नाम है SPSR underscore SVC. SPSR underscore SVC. तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं अगर यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड में जा रहा हूँ तो मेरे पास जो R0 से R12 है वो वही रजिस्टर है जो यूजर मोड में थे. मेरे पास नए कौन से रजिस्टर है? मेरे पास ये नए रजिस्टर है R13 underscore SVC, R14 underscore SVC and SPSR underscore SVC. Okay, so these are the three new registers available. Okay, these are the three new registers available. और दूसरी बात है, यहाँ पे जो R13 दिख रहा है और यहाँ पे जो R14 है, okay, so these R13 and R14 is different from this R13 underscore SVC and R14 SVC. Okay, in the same manner, because of some reason, if I go from user mode to the fast interrupt mode, can you see the arrow? अगर मैं user mode से अगर मैं FIQ मोड में जा रहा हूँ, ओके, तो मेरे पास कितने नए रजिस्टर है? मेरे पास ये सब नए रजिस्टर्स है और ये वाला. What about R0 to R7? These R0 to R7 are the same as R0 to R7 in the user mode. तो ये R0 to R7 और ये R0 to R7 they are same. तो मेरे पास नए क्या है? मेरे पास ये नए है R8 underscore FIQ, R9 underscore FIQ, R10, R11, R12, R13, R14 और SPSR underscore FIQ. About this PC, that is nothing but ये जो R15 है, ये R15 और ये R15 एक ही बात. Okay, and CPSR and this. Okay, so this is about your the registers which are available. अभी इसमें और एक important चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, now here you will also able to understand what do you mean by privilege mode and what do you mean by unprivileged mode. ये भी यहाँ पे concept clear हो जाएगा. See here now when I am talking about the user mode, आपने बताया कि user mode is unprivileged mode and all other modes are privileged mode, जिसमें system mode भी privileged mode में. Okay, मैंने आपको बताया था कि privileged mode में I have privilege to read and write your CPSR और unprivileged mode में I can only read my CPSR. Okay, तो ये देखो अगर मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड जा रहा हूँ, I want everyone to pay attention now. अगर मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड जा रहा हूँ तो ये जो यूजर मोड का जो CPSR है, यूजर मोड का जो CPSR है, that has to be saved in SPSR underscore SVC. अगर मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड जा रहा हूँ तो यूजर मोड में जो CPSR का जो भी कुछ कंटेंट है या जो भी कुछ स्टेटस है वो मुझे कहीं ना कहीं तो सेव करना है. तो वो मैं सेव करूंगा यहाँ पर, इसलिए ये जब CPSR जब सेव होता है वो बन जाता है सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर अंडरस्कोर SVC इसलिए है कि बिकॉज मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड गया और ये जब मैं ये मोड से दूसरे मोड जब गया हूँ तो यूजर मोड का जो CPSR का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं तो भी मुझे रिजर्व करके रखना है. तो वो मैं कहाँ रिजर्व करके रहूंगा? SPSR अंडरस्कोर SVC में. ओके, और ये जो CPSR दिख रहा है ये CPSR ये सुपरवाइजरी मोड का खुद का CPSR है. ये खुद का CPSR है. ओके, ये खुद का CPSR. सिमिलरली अगर मैं यूजर मोड से अगर इंटरप्ट मोड में जा रहा हूँ तो वही बात है, ये CPSR मुझे सेव करना है. तो ये CPSR कहाँ सेव होगा? ये होगा यहाँ पे सेव, इसलिए वो सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर में सेव होता है. और इंटरप्ट का खुद का CPSR यहाँ पे, तो इंटरप्ट का खुद का CPSR यहाँ पे
और जब यूजर मोड से हम इंटरप्ट में जा रहे हैं तो ये CPSR कहीं तो भी सेव करना है, तो वो जाके यहाँ पे सेव होता है, वो जाके यहाँ पे सेव होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ हम यूजर मोड से बाकी के मोड तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शंस, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन बोलो या फिर और बिकॉज ऑफ इंटरप्ट, दोनों चीज एक ही है. बिकॉज ऑफ इंटरप्ट आई एम गोइंग फ्रॉम यूजर मोड टू सम अदर मोड, या फिर बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस आई गो फ्रॉम यूजर मोड टू द सम अदर मोड. ओके, तो हम जब यूजर मोड से किसी भी मोड की तरफ जाते हैं, हम जब यूजर मोड से किसी भी मोड की तरफ जाते हैं, तो अदर देन दिस यूजर मोड all other modes are called as exception modes. All other modes are called as exception modes. तो आपको और एक नाम पता चल गया है, that is exception modes. तो exception modes कौन से modes है? Exception modes are the modes other than user mode. Exception modes are the modes other than user mode. Okay, एक मिनट. Okay, so other than your user mode, all other modes are exception modes. Other than your user mode, all other modes are exception modes. और exception mode इसलिए भी कहा जाता है because of exception or because of interrupt you go from user mode to other different modes and that other different modes are exception modes. Okay, तो वो भी एक reason है that other than user mode all other modes are called as exceptions. Exception इसलिए कहा जाता है because of exception or interrupt you go from user mode to some other mode. Okay, तो वो उसका एक मतलब होता है. Okay, अभी और एक बात है, other than user mode all other mode are called as privilege mode. All other modes are called as privilege mode. अब ये इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि privilege mode because I can read and write my CPSR. I can read and write my CPSR. तो अभी वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी यहाँ पे बताता हूँ. So in my privilege modes I would say these are all privilege modes: supervisory, abort, undefined, interrupt, fast interrupt. Okay, and your system also. Okay, now here if you see properly, your CPSR is saved in this SPSR. That means I can read as well as write my CPSR. I can read as well as write, but that is not possible here. That is not possible here. अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे SPSR क्यों नहीं है? यहाँ पे SPSR क्यों नहीं है? The only reason is because I cannot go from user mode to user mode. I cannot go from user mode to user mode. That is why there is no CPSR available in the user mode. But other than user mode, all मैं user mode से दूसरे mode में जा सकता हूँ because all other modes are exception modes. Okay, that's why दूसरे modes बाकी के जो modes है they are having SPSR. So everywhere you can see a SPSR. Everywhere you can see SPSR. Okay, so this SPSR is the one which you are saving from the user CPSR, क्योंकि आपका ये user CPSR ही बाद में यहाँ पे आके सेव होता है. So in that case I can say I have a privilege to read as well as write my CPSR. ये जो मैं जो सेव करता हूँ I can read as well as I can write, but that provision I do not have in the user mode. That is why it is called as unprivileged. तो अनप्रिविलेज में सिर्फ मेरा जो CPSR है उसी को मैं रीड कर सकता हूँ, मैं राइट नहीं कर सकता हूँ. बट अदर देन यूजर मोड all other modes I can read and write my CPSR. Okay, so that is why it is called as a privilege. So I think we can stop here. Do you have any questions related with this? Do you have any questions related with this? Yes. Someone of you please कुछ बताओ. No, sir. Okay. No, अच्छा, sir. before I go, let me tell you one more thing. Can you see यहाँ पे क्या किया है? बैंक रजिस्टर लिखा है. और बैंक रजिस्टर कौन से जो ये डार्क पोर्शन वाले.
तो बैंक रजिस्टर कौन से, देखो ये वाले, ये सब बैंक रजिस्टर है। अब बैंक रजिस्टर बोले तो क्या है, बैंक दीज आर द न्यू रजिस्टर्स, यानी अगर मैं यूजर मोड से सुपरवाइजरी मोड जा रहा हूँ तो ये दो रजिस्टर और ये रजिस्टर है, ये जो मुझे नए मिलने वाले, दे आर द प्योर न्यू रजिस्टर्स, okay, and these registers are called as banked register. So which are unbanked register? Unbanked registers are all other than जो ये डार्क शेड है, इसके अलावा जो बाकी के जो दिख रहे हैं, they are unbanked register, they are unbanked register. So unbanked registers are what, the registers which are the same. अगर हम यूजर मोड से अगर अबॉर्ट मोड में जा रहे तो ये जो R0 से लेके R12 है, ये वही है जो R0 से लेके R12 है. So can I say these are R0 to R12 are called as unbanked register? What are then who are the banked register? The new registers R13 underscore abort, R14 underscore abort, and SPSR underscore abort. These are the three new registers. So before I go, if I ask you the question, give me the name of a mode in which you will have maximum number of new registers. Tell me the mode, the name of the mode in which you will have maximum number of new registers or maximum number of banked registers. What is your answer? FIQ. Yes, you are right. FIQ. So can you see your FIQ? Fast interrupt. यहाँ पे R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 और ये आपका CPSR. ये सब नए रजिस्टर है, मैक्सिमम नए रजिस्टर है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बैंक रजिस्टर, 8 बैंक रजिस्टर, यानी आपको 8 नए रजिस्टर्स मिलते हैं जब हम FIQ मोड में होते हैं. और बाकी के में इसमें 1, 2 और 3, बाकी के इसमें सिर्फ 3 बैंक रजिस्टर है. सो कैन आई से अदर देन FIQ, in other exception modes I have only 3 banked registers. Again I'm repeating, I can comment now, other than FIQ, in all other exception modes I have 3 banked registers, and FIQ is the only one mode or exception mode or exception in which I have maximum number of banked registers. They are total 8 numbers. Okay. अब ये सब समझने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कितने टोटल रजिस्टर्स है, कितने ये सब दिख रहे हैं पूरा, ये हम काउंट करने वाले. वी आर गोइंग टू काउंट. जो सेम रजिस्टर है हम उसको काउंट नहीं करने वाले, जो डिफरेंट है, जो बैंक है, वो अलग से काउंट किया जाएगा. ओके. और जो सेम है उसको हम एक ही बोल के ट्रीट करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब रजिस्टर काउंट करेंगे और हम बाद में देखेंगे कि कितने जनरल पर्पस रजिस्टर है, कितने स्टेटस रजिस्टर है और कितने प्रोग्राम काउंटर है. अगेन आई एम सेइंग, I want to know how many general purpose registers are there. I want to know how many status registers are there, and at the last I want to know how many program counter registers are there. Okay, so general purpose कितने हैं, status registers कितने हैं और program counter register कितने हैं. Okay, so this everything we will see in the next lecture. अटेंडेंस हो गया क्या? यस, अटेंडेंस हो गया. सीआर, अदिति, योगेश कोई है? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को?
योगेश, अदिति, someone please acknowledge. Yes, sir. Attendance हो गया क्या? हाँ, sir. Okay, okay. Okay, then you can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. प्लीज रिवाइज, जो मैंने लिया आज रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा. ओके, प्लीज रिवाइज.